हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था और हमने ये डेरिवेशन कर लिया था। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के आर इंटू ए। ठीक है बच्चों, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग बच्चों यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया था व्हाट डू यू मीन बाई के डी। ठीक है, तो के डी है डिसअपियरेंस कांस्टेंट है, जहाँ पे के डी क्या होगा बच्चों, स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट इनटू रेट कांस्टेंट होगा। अब इसको हमने बच्चों डिराइव कर दिया था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं मोल। ऐसी कोई भी चीज़ जो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका रेशियो हम लोग ले सकते हैं। तो हम मोल भी ले सकते हैं बच्चों, मास भी ले सकते हैं। ठीक है ना, और अगर हम चाहें तो माइनस जैसे डी आर बाई डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर इंटू ए, यहाँ से हम इसकी जगह बच्चों रेट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की जगह मोल भी लिख सकते हैं, मास भी लिख सकते हैं, रेट भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्टिकल रोटेशन है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक बच्चों, दूसरा हमने डिफाइन किया था हाफ लाइफ। ठीक बच्चों, हाफ लाइफ जो होता है, हाफ लाइफ की वैल्यू आती है बच्चों ln2 अपॉन के डी आती है ना। हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होती है, ln2 अपॉन के डी आती है। कुछ हमने ग्राफ भी बनाया था बच्चों जो हाफ लाइफ भी आता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। तो बच्चों हमने ये देख लिया था के आर इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। यहाँ से आगे बच्चों टी हाफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन के आर, वेयर के आर इज रेट कांस्टेंट। क्लियर। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है बच्चों तो आपको क्या लेना होगा, टी हाफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन क्या होगा, के डी होगा, वेयर के डी इज डिसअपियरेंस कांस्टेंट बच्चों। ठीक है ना, डिसअपियरेंस कांस्टेंट क्या होता है, के डी इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट इनटू क्या होगा, के आर होगा। क्लियर। व्हाट इज के आर, के आर इज रेट कांस्टेंट। क्लियर। अच्छा, वन मोर थिंग, इफ यू टॉक अबाउट लाइक टी हाफ, टी 3/4, टी 1/4, टी 1/10 or t 1/n, right? What is t half? T half is basically half life. What does it mean? The duration in which reaction is 50% completed. This is the 50% completion time. ठीक बच्चों, 50% completion time. Okay. What is t 3/4? It is 70% completion time. ठीक है बच्चों, 70% completion time. Okay. t 1/4 is 25% completion time, and this is what, 10% completion time. Okay, this is 1/n into 100. So this much percent completion time. Okay, so they may ask one question like we have written t half. T half is nothing but, t half is what, 1 upon kr ln a naught upon a naught minus x. We will put x is equal to a naught by 2. Okay, so from here we get t half is equal to ln 2 upon kr. Exactly in the same way, and what you see, there is no a naught. Okay, a naught is cancelled out, so t 3/4, then 1 upon kr ln, what is a naught, a naught is same
a naught minus 3 a naught by 4. Again you can see this a naught is going to cancel out. So T3 by 4 is coming out 1 by kr and ln 4 आ जाएगा. ओके बच्चों, तो दिस विल बिकम 2 ln 2 by kr and T3 by 4 is basically what? 2 times of T half. This is very important also बच्चों. Okay. So if you go for T 1 upon n, then what you can write? 1 by kr ln and a naught, instead of x you can write x by what? 1 by n means nth part, half means you will write a naught by n. Okay, this will got cancel out. Again 1 by kr ln 1 upon 1 minus 1 by n. Okay बच्चों, so we are just observing that the very prime feature of first order is half life or any fraction of, okay, the completion time of any fraction. Okay, the completion time of any fraction is independent of initial concentration. Like we have seen, T half is nothing but ln 2 upon kr, exactly T3 by 4, again ln 4 upon kr, and T1 by n is what? Ln n upon 1 minus n and 1 by kr. Okay, so if you plot the graph like T half and initial concentration, so you will get this one. Its coordinate is 0 comma ln 2 upon kr. In case of T3 by 4, initial concentration, its coordinate will be